Hello guys, am I audible? Yes, sir. Yeah, if possible, then turn on your video also. Okay, it will be better to judge you guys during Okay, the sir. group task. We'll be starting soon. Okay. So you guys know ना how to मतलब start मतलब कैसे क्या करना पड़ता है ग्रुप टास्क में ये पता है ना आपको ऑलमोस्ट. Yes, sir. Sir, basically, we have to first introduce ourselves and then discuss on the topic which is given to us, right? मतलब जो स्टार्ट करेगा वही बस इंट्रोड्यूस करेगा। बीच में जो बोलेंगे अच्छा वो इंट्रोड्यूस मत करना। अच्छा अच्छा ठीक है. तो अभी एक टॉपिक देता हूँ. ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा अभी हूँ. क्या है ना कि पहले स्टार्ट टॉपिक आप लोग को स्क्रीन शेयर पे दिखा देंगे। हाँ रोहित बोलो बोलो. अभी एक टॉपिक स्क्रीन शेयर पे दिखा देंगे, उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट देंगे उसको पढ़ने के लिए और पॉइंट्स प्रिपेयर करने के लिए, और उसके बाद जो डिस्कशन होगा वो 15 मिनट्स का चलेगा। हाँ, और उसमें से लास्ट 2 मिनट्स कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ. और ठीक है अगर मैं. बेस्ट बोलो बोलो. और अगर बेस्ट होगा अगर आप लोग सब कैमरा ऑन करके डिस्कस करें। हाँ ऑलमोस्ट सबका कैमरा ऑन है. ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, ज्वाइन किया उन लोग को फिर से बता देता हूँ. यू हैव 3 minutes लेफ्ट. ठीक है, जस्ट नोट डाउन योर पॉइंट्स. दिस इज द टॉपिक ऑफ ग्रुप टास्क टुडे. ओके, देन वी हैव 15 minutes फॉर डिस्कशन एंड 2 minutes फॉर कंक्लूजन. वन मोर थिंग, जब आप लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो जो बोल रहा है बस वही माइक ऑन रखना. बाकी कोशिश करना कि मतलब बाकी सब म्यूट रखे तो बैकग्राउंड नॉइज कम आएगा थोड़ा. ठीक है. Okay, sir. Yeah, you guys have 1 more minute. Just note down your points. Okay, you all understand the topic? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, then start the GT. Hello, teammates. Hello My name is everyone, Varun I'm Yadav. Aman Kumar I'm and glad to take this I'm very much opportunity glad to to initiate the group initiate this. discussion. The topic which is given to us is that we have to manufacture a colored Xerox machine, and the cost of the Xerox has to be equal to that of black and white. So we need to for that we need to means we need to use a low components, so that we can get that we can have a par with the black and white. So in my opinion, if you are providing a service, then we should never compromise with the quality, so otherwise we will lose the goodwill of the customers. So now I would like all of us to give our respective views and ideas on this topic, and I'm Yes, I opening the house totally for discussion. Yes, I totally agree with you, Varun. That yes, as you said that maintaining the customer goodwill is very important for us. So, in my opinion, I'd like to say where it is better for us to know the customer and let them know that we are producing the component which is going to be cheaper to give the
Xerox at a cheaper price. So we can manufacture 2 to 3 components, like one component which is cheaper and one component which is little more costlier, to give more. So according to their need, customer can purchase their printer and do their thing. uh, what you will say on that? Yes, I agree with both of you, Varun and Yes, I completely Ayub. agree with you. Yeah, actually, as we see here, like we have to reduce the cost than this black and white paper. If we see the Xerox machine, generally it will be having a cartridge and all those things in which the colors, different colors will be mixed. So in that we can reduce the color combination. Like we don't need to show the contrast between every color. Like if we put the major colors in that, so that will be better. Like red, black, and all these things will be occurring very frequently, and some yellow and those things will occur very less frequent. So we can manufacture cartridge in such a way to reduce the color combination. So this can be one. Yes, Hemant, I agree with your point. Yes. And To in the add to the topic, point there is one more of thing my written that only 30% of the customers will get to know, and 70% of the customers don't know. But here we can't risk, Mhm. because these 30% people can give a bad review about our machine, and this can spread also. So we should And not go with these numbers 30 and 70. We should ignore it. yes, and the to rest add to the 70% point who of are my not going to teammates. Yes, recognize this, definitely. later on a stage, if they will recognize that the printer they purchased is very of bad quality, then they will spread about the company, and company's goodwill will will be bad. So we can produce any other item and Yes, come up with I new. want to add a point here that like 70% people are not able to detect the damage. So it might be possible that we are making a lot of profit by giving that to 70% people not able to detect the problem. So it might be the case that 30% people finding the damage. But if we see the financial side, then it might be possible that 70% is making us a much more profit in terms of finance. Vivek, what you are telling is absolutely correct, but you know that these 30% people might give a bad review about our machine, so that 70% will also get to know that, yeah, there is something defective in this Xerox, and we will lose the goodwill of the customers. Okay, Yeah, To in add that to right. the I point would of my like to Yes, I teammates, make a completely I agree think with you, we Varun. should first of all, we know India is a price-sensitive country, and using cheaper technology will help us gain more customers. People will prefer the cost over quality. So I think we should go with the low quality one. But on the flip side, there is a issue that if we are using the cheap quality printers, in the long run, it could damage the reputation of the country, of our print company. So, you guys can like to Hello, add to it. hello Generally, here everyone. I would like to Hello add one everyone. point that Myself, my generally this 30% people, whenever like this problem can be identified only when like more color combination will be there, like a large number of color differentiation is there. So then only those 30 people percent are able to identify the difference. So what we can do is we can keep two cartridges with us, one with high quality and one with low quality. And whenever this too many color contrast is there, at only those 30% places we can use that high quality one, and the low quality we can use for remaining purpose. That's 70%. hello everyone. This can be like Myself Aryan Kumar, and on this topic, I would like to give my opinion. According to me, we can go for mass production. If we will go for mass production, then I think we will make a huge profit instead of compromising the quality of the printer. So we should go for I want to say mass production, and then we will have a then we will sell a large number of printers. Then we will ultimately have profit. Then we don't need to make cheap quality printers. I think this should be also a valid point. Yeah, to I add to want the to point add I of agree that with you, Aryan, I Aryan. think Aryan, when I we agree with you, Aryan. As we you can said that print and going for we can mass save production, we cost, can we can go increase our beyond profit. the So this will break-even ultimately lead production, to so we can produce the putting more money in printers the at a R&D cheaper rate. section, But at the same time, by in which we our can task, improve it the is given technology that of the printer okay, further. we have to use the cheaper products to manufacture the cheaper printers. It is given in the task. I yes, understand
I agree with the Sivesh point that he said that we should work on the R&D point of view. So like we can do the Six Sigma kind of analysis, the Sigma analysis that we do. So by virtue of this, we would be able to identify what are the problems due to which that we are getting problems in 30% cases, right? So if we do the quality checks, then it might be possible that we would be able to identify few of the components of the Xerox that are not working quite well. So if we change that particular components, then it might be possible that by reducing the cost also, we can get the better quality Xerox machines. So it will Indeed. definitely decrease the detectable items. So like it can decrease down from 30% to maybe 10%. Yeah. So We again, can, it will by definitely make initially the good use. using low cost products, we can increase our profit. Then we can use those profit in R&D and to find the newer technologies at a cheaper cost. That is, Yeah, we can right, also right. scale in Hello, this process. teammates. Can We be have. applied. I have one more idea. That if you want to do the cost cutting, then we can do it in the quality of the paper. We can reduce the quality of the paper, but not of the print. So this way, we can do a little bit of cost cutting, and that will be benefit for our machine and service But providers. I think the quality of the paper really matters because the touch and feel that we get by touching a paper really impacts a lot. So if we touch a smooth kind of surface kind of paper, though it feels good and the brightness that we also get is quite better as compared to the low quality papers. So compromising on the paper, I don't think it is a good idea. But yeah, we can also think about it if we are getting a higher revenue out of it. I'd Yes, like to Vivek, We I continue can with want do to, like I Aryan's also point want to, that quality Choose actually. and the I best also want Vivek to and add one more point here. combination. I want to say that poor quality materials make machine work for less time. You all, I think you all should be coping up with this. And then poor quality machine needs more frequent maintenance, and then more frequent maintenance ultimately needs more cost in long run, and therefore complexity right, also right. increases because every time we need to But in regarding repair that machine. Indeed, in the long guys, run, it as regarding will this Aryan has quality, definitely. Vivek and mentioned Harish that were if speaking we will regarding its produce quality. if we will produce the printer at a mass production more than the break even production, so we can get profit. In my opinion is we can produce both the printers, like one printer which is of high quality materials, made of high quality materials, and we can produce that in mass production, and that printer can also be cheaper according to Aryan. That is good point. And one printer that is of made up of not very much good quality materials. In that way, we have both type of printers, and the customer can choose after their use also. They will go for the high quality printers according to their need. So it is my opinion. I totally agree with Vivek and Hulk. Like we have to reduce the cost of the machine. Like there are other like other like we can consider like generally we see that in printer will be having two options like A4 and A3. So we can go maybe we can go for A4 so that we can reduce the size of the machine. So similarly we can go for other features such as Xerox machine will be having scanning and also copy option. So here we can go for most of the options is copy only because we are going for only Xerox photocopy. So like that we can reduce the cost of the machine. To add to the point of Aryan, Guys, we can give Ayush Srivastav also opportunity to Yes, speak Ayush, it. please. Thank you for giving me this opportunity. I didn't understand the topic well, so I'm not able to recall the things. Okay. Let And me explain as once I again. It's okay, it's Okay, okay, Ayush, it's just wait a completely minute. okay, I'm explaining Ayush. once again. We have to create a Xerox machine that would produce color photographs, I mean, color Xerox, and the cost of it should be equal to the black and white Xerox. And the cost cut, and we have to do the cost cutting in the components that will be used to manufacture the machine. Ayush, I hope Guys, you we should understood the move topic. forward to. you are not audible, Ayush. I think he's cutting. Guys, Uh, we have to move forward to Guys, the I also conclusion want to and add a point here that make a point. Okay, tell yes, I me. want to add a point that our focus should be like in this way that what is our objective? Like whether our objective is to make a profit, like the bulk of profit, or we want to make a goodwill for a long run. So my point is we want to be in the long run business or we want a just kind of a short term business that we want to stay here for 5 or 10 years and that we get out of this business. We will do some other kind of business. So if we are for short term,
then doing the cost cutting is, I don't think it is a major problem, because people will use for few years and then they will left. But if we are in the long run, then definitely we have to go for the quality part of this. Then there we have to make our components much better. We have to use our components much better. So by virtue of this, we would get a better quality Xerox machines. So it will definitely make a goodwill to the person that yeah, this company is making a good kind of Xerox Indeed, machines. And I would also Yes, agree the with Vivek, Vivek, and to add as to you one said There point, that is one more Yes, to this. Vivek, I initially, also Can agree we to your point. can we I brand was just categorize recognition, willing into to the we say should two? go the for same cheap point only. I quality. was trying to say that the shortcut doesn't work for long. And I yes, also yes, want yes. to add that customers also need to be that much mature that not everything can be given in such a low cost. So if you want quality, then you should also spend price also. I think and this point and should also be considered. I'd like Indeed, to add point to the Vivek that any company, it is not given in the task that it is short term or long term company. We can assume that any company want to sustain in the market for longer period of time. So we have to maintain the customer goodwill. to Yes, add to the Correct. initially point of there Vivek, can be I some sort think of loss, but initially, in long for run we we can we divide the should process in focus two on stages. The uh, first process we, stage is getting the brand recognition, and we can get that by using that company material printer as cheap. We can get a niche in the industry by using that thing by cheap, and eventually we will move on to the higher end section, that is good quality printers. But first of all, we have to establish brand name, a niche in that industry. yes, events. I want to add with your point that generally any company, any big company, any huge company we see, they work on the same strategy. That initially Guys, they suffer some sort of loss, they go in loss, and then one more further minute, Yeah. then you need to they conclude, see okay? for profit. Okay, Yes. okay, guys. Uh, I think we have to make all the points ready so that any of us can conclude. Yes. Please let me know the points. Yes, I am giving a point. I Like, so for the long run, definitely we have to work on the quality components, because that will definitely make a goodwill, and it will subsequently in the upcoming Yes, years Vivek, I will would give us the like to profit. add one. I would like to add one point with you. You said that we can decide that we want to do it for a long run or for a short term. So Yes, yes, if you want to do for a short term, then okay, it's okay. We can reduce the quality of. I mean, we can use reduced components. And if yes, you yes. want to, and if you want to do for a long run, then we can have two options, that we will keep two machines, and we will Mhm. tell the customers that this is the difference in the quality. What kind of By they are doing this, we quality? will not lose the goodwill of the customers also. So we Yes, Yes, all right. agree Varun, with and I would Varun. like to summarize all the points that we have discussed in this meeting. First of all, we have a situation that is, what should we do, cheap quality or higher quality? So first point is that we should not lose the goodwill of the customer, and the point suggested by our teammates is that we can go with cheap different quality of papers used, or we can have different specifications of computer printers, that is, one is low quality printer, one is high quality printer. Or other strategy we can focus upon is that we can first build upon our brand by using cheap products, and then go for R&D and developing higher end products. And economy of scale will work on this, as our teammates have suggested. So we should use all these points in our strategy and not work in silos. That's how I would like to conclude this point. So we all agree with the CVs and Thank you everyone for let, coordinating such a good manner. it is not conclusion, I think. So हेलो गाइस. Yes, sir. Yes, sir. नहीं, अभी जैसा मेन जो जीपी का पॉइंट होता है ना, उसमें आप लोग को क्या क्या चेक करते हैं, वो होता है कि लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं उसमें, कि मतलब कैसे डील कर रहे हैं या फिर कैसे मतलब ऑर्गेनाइज वे में आप अप्रोच ले रहे हैं. बाकी और देखते हैं टीम वर्क, आई मीन लाइक कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए कि सारे एक दूसरे के पॉइंट पे एग्री करते हुए बोल रहे हैं. तो ये सब को पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला. लाइक मतलब सब लोग फंबल भी नहीं कर रहे थे और उसमें से भी एक दूसरे से एग्री करते हुए पॉइंट को आगे ले जा रहे थे और कंक्लूजन तक रीच किए. कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे मिसिंग था, लाइक आप लोग थोड़ा मार्केटिंग के रिलेटेड बोल सकते थे, लाइक स्कूल्स कॉलेजेस के सामने
वो जेरोक्स का अगर शॉप वगैरह रहे, या फिर थोड़ा मार्केटिंग के में भी ले जा सकते थे, बट आप लोग बस उस पर फोकस किए कि उसका जो कंपोनेंट्स को क्या कैसे करना है। वैसे ओवरऑल जीडी बहुत सही था। और हल्क जो सर, है वो स्टार्टिंग में जो बोलते बोलते दो लोग स्टार्ट किए थे, हल्क और वरुण। तो आप हल्क जो रुक गए बोलते बोलते वो सही किए, क्योंकि एक लोग ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर दो तीन चालू करे तो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एक लोग रुक जाए, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है वहां पर। और बाकी अगर आप लोग टाइम में कंक्लूजन पे पहुंच जा रहे हैं ना, तो फिर वो एक पूरे ग्रुप को अच्छा मार्क्स मिलेगा। और बाकी सब लोगों ने अच्छा अच्छा पॉइंट बोला, बट हेमंत का है थोड़ा कि मतलब लास्ट में जाते जाते आप थोड़ा शांत हो गए थे, स्टार्ट में बोल रहे थे। और आयुष तो आप तो पार्ट नहीं लिए शायद जीडी में, आप लेट ज्वाइन किए तो आपको पता नहीं होगा शायद टॉपिक के बारे में। yes, sir, I didn't और understand the बाकी topic well. That's why I सर, was observing the whole scenario. ओके, और रोहित बाकी सर, पॉइंट इंडिविजुअल जैसे मार्क्स के बारे में बता दीजिए, किसको कितना मार्क्स मिल सकता था, कैन यू कौन एलिमिनेट हो सकता इलिसिडेट था। ऑन इंडिविजुअल यस शॉर्टकमिंग्स सर। सर, हम लोग की क्या क्या मिस्टेक्स रही? या वही देखिए, मैं बता रहा हूँ मार्क्स कि के बारे में हाँ, अभी उतना मत सोचिए। ओवरऑल आप लोग का जीटी बहुत अच्छा गया है, ठीक है, मैं ये बता सकता हूँ। अब देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट डाउन किए, जैसे वरुण आपने स्टार्ट किया है वो अच्छा किया, मतलब दो तीन दिन मिलकर स्टार्ट किया, लेकिन दोनों रुक गया, वो एक अच्छा डिसीजन लिया था, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीन चारों के चारों बोलना स्टार्ट कर दिया, चारों ही पैरेलली बोल रहे हैं। इससे क्या होगा कि किसी को अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, चारों का चारों का ही मार्क्स घटेगा इससे। ठीक है, तो बेटर यही होगा कि किसी एक को बोलने दीजिए और आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट मैं वरुण आपका बोल रहा हूँ पहले, ठीक है। आपने जो एक शायद पॉइंट बोला था कि पेपर क्वालिटी को हम लोग मतलब रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हाई क्वालिटी, तो मेनली हम लोग प्रिंटर जेरोक्स मशीन की बात कर रहे हैं। पेपर क्वालिटी, पेपर कौन सा यूज करेगा वो तो इंडिविजुअल हो गया ना, कि कौन उस प्रिंटर को यूज कर रहे हैं, जेरोक्स मशीन को यूज कर रहे हैं। तो आप पेपर क्वालिटी को सर लेकर आप वहाँ कमेंट नहीं कर सकते हैं मेनली। सर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, तो मैंने सोचा कि पेपर कॉस्ट कटिंग हाँ, अगर पेपर में करे तो हम लोग हाँ, बढ़ा लेकिन सकते हैं आप प्रॉफिट। आपको मतलब प्रॉब्लम को अच्छे से समझना पड़ेगा। आप पेपर नहीं बेच रहे हैं, आप मशीन बेच रहे हैं। वहां पर पेपर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है एक्चुअली में। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है। और एक चीज बोलूँ आप, मतलब हेमंत आपका एक सही था कि आपने बोला कि एक समय जो बीच में कोई नहीं बोला था ना, उसके बाद आपने जो मतलब एक्सप्लेन किया टॉपिक को, शायद आपने वरुण या फिर किसने किया था टॉपिक को एक्सप्लेन, तो वो अच्छा किया था कि हाँ, मतलब एक टीम वर्क आपने दिखाया कि कोई एक समझ में नहीं है, मतलब कोई टॉपिक के बारे में थोड़ा समझ नहीं पाए तो उसको आपने बोला, तो एक अच्छा टीम वर्क है, ठीक है। बाकी हल्क आपने जो दो पॉइंट बोला था, मैंने एक पॉइंट बोला था कि मतलब दो वैरायटीज ऑफ मतलब जेरोक्स मशीन होगा, एक चीपर में और एक थोड़ा क्वालिटी अच्छा में। ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप दोनों तरफ से ब्रांडिंग कर रहे हैं कि जिसको जो जरूरत है आप वो लीजिए। आप दूसरे को मतलब ऐसा नहीं है कि खराब क्वालिटी प्रोडक्ट आप ऐसे जबरदस्ती सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा पॉइंट था। लेकिन आपका वही एक चीज और जो खराब था हल, कि जब दोनों दो जन बोल रहे हैं, आप उसमें बीच में डायरेक्टली उसको मतलब ओवरलैप करके आप बोलना चालू कर दे रहे हैं। ये मतलब बैड हैबिट है, ठीक है। इस चीज के लिए आप हाईलाइट हो रहे थे दो तीन बार, ये चीज आपका मैं नोटिस किया, ठीक है। लेकिन फिर आपका वो एक और पॉइंट अच्छा था कि आपने किसी को मौका दिया जो बोल नहीं रहा था, शायद आयुष बोल नहीं रहा था, तो आपने उसको मौका दिया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दिया। ये एक अच्छा पॉइंट आपका, एक पॉजिटिव मार्किंग होगा इससे, ठीक है। और एक और पॉइंट आपका कि आप खत्म होने के बाद, जैसे सीवेस ने खत्म किया, उसके बाद आप फिर से ऐड करने की कोशिश कर रहे थे कंक्लूजन के टाइम, ठीक है। ये वाला मत कीजिए, मतलब कोई एक कंक्लूजन अगर कर दिया है तो मतलब दैट्स ऑल, वहीं पर जीडी खत्म हो जाता है, जीटी, ठीक है। ओके। और पॉइंट अगर बात करें तो ये विवेक का भी पॉइंट सही था, जो सिक्स सिग्मा के बारे में वो बता रहा था कि मतलब एग्जैक्टली। कम कॉस्ट में भी लॉस कम होगा, तो जितना डिफेक्ट्स कम होगा तो एक्चुअली प्रॉफिट होगा वो हाँ, मेंटेन। फिर वो एक एक ये अच्छा बोला आर्यन था वो। थोड़ा पॉइंट कम रख रहा था, आर्यन पॉइंट उतना बोल नहीं रहा था। मतलब हाँ। स्टार्टिंग में तो आर्यन पार्ट नहीं ले रहा था, बाद में थोड़ा बोलने का कोशिश कर रहा था। और जैसे अगर सर किसी स्टार्टिंग को में भी बहुत ऐसा हो ज़्यादा रहा है, कंपटीशन हो गया था, इसी वजह से बोलना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि और भी लोग बहुत बोलने के लिए सोच रहे थे, नो, इसी वजह से। ऐसा होगा ही, नहीं ऐसा उसमें एक्चुअल जीटी में भी इससे ज्यादा होगा, ठीक है। आप मतलब मान रहे हैं कि सब दोस्त थे, लेकिन एक्चुअली में आपको भी मौका ढूंढना पड़ेगा बोलने के लिए, ठीक है ना।
जैसे सीवेस आपका और मैं अगर एक दो पॉइंट नोटिस किया था, ठीक है। Yes, sir. जैसे आपने जैसे आरएनडी का एक पॉइंट बोला था, तो ये एक अच्छा पॉइंट था कि कोई भी फील्ड में आप आरएनडी कर सकते हैं। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप दिमाग में हमेशा मतलब यूज कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक रहे, उस चीज को अगर हम लोग को क्वालिटी इंप्रूव करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आरएनडी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसमें, ठीक है। Yes, sir. आ, और और बाकी बाकी सब सबको लोग जो एग्री कर रहे थे कि ये जो मतलब गुडविल ऑफ कस्टमर है उसको लूज नहीं करना है, तो ये एक बहुत सही पॉइंट है कि मतलब कस्टमर एट्रैक्शन जो है ना, ये एक मार्केटिंग का पार्ट है। तो जो ये पीएसयूज कंपनी होती है ना, वो लोग मार्केटिंग पे बहुत फोकस करती है, तो ट्राई करिए कि मार्केटिंग के कुछ कुछ पॉइंट रखना वहाँ एग्जैक्टली। पे। और आर्यन, एक और चीज, आप बीच में बोलने के टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने आप को, उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो स्टार्ट कर रहा है बस वही इंट्रोड्यूस कर, दैट्स एनफ। सर तो मेरे बारे में किसी को पता नहीं है ना सर? ना तो इट्स नहीं, ओके वहाँ पे आपको। आप लोग को वहाँ पे नहीं पता रहना चाहिए। आप लोगों को वहाँ पे चेस्ट नंबर मिल जाता है, तो उसके हिसाब से मार्किंग होता है। नाम से वहाँ कोई अच्छा, तो मतलब फिर नहीं से है। नहीं नाम बताना है ना? ना ना बोला रोहित ना सर, स्टार्ट। मेरा एक हाँ क्वेरी था कि वहां पे जो, जैसे कि वहां पे तो किसी का नाम नहीं पता रहेगा, वहां पे P1 P2 P3 रहेगा, तो अगर हमें किसी को एड्रेस करना है तो हम लोग P1 P4 बोल के एड्रेस हाँ हाँ करेंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे और कि लाइक माय आप अगर फ्रेंड उनके वन तरफ साइड। देख के बोलिएगा ना, हाथ दिखा के कि लेट माय फ्रेंड स्पीक, तो वो अंडरस्टूड है कि वो समझ जाएगा कि किसको बोलना है। नहीं, हाँ, बट वैसे आप मेंशन कर सकते हो ऑब्वियसली कि लाइक माय फ्रेंड P1 सेड या P2 सेड, वैसा कर सकते अच्छा अच्छा। हो। और सर और बाकी एक जो बात आप था लोग कि का सर, जीडी हुआ, हाँ बताइए। हाँ सर एक बात और था सर, वहां पे अगर हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो उसको फ्रेंड से एड्रेस करें या टीममेट से एड्रेस करें? ये तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक माय कुछ भी। टीममेट्स या लाइक माय फ्रेंड या लाइक मेरा ऐसा माय लगा कि कलीग, फ्रेंड ऐसा कुछ भी। कुछ इनफॉर्मल टाइप ना हो जाए ना, इसलिए कुछ। फ्रेंड्स मत यूज करें तो ही ज्यादा सही है एक्चुअली में। टीममेट्स। या अच्छा। और सर बाकी जो आप लोग टास्क एक में दूसरे को एग्री करते हुए जो कंक्लूजन तक पहुंचे ना, वो सच में बहुत अच्छा था। अभी इतना स्मूथली वैसे जीडी जीटी कभी होता नहीं है, वैसे सब लोग एक सर दूसरे से एग्री टास्क करते हुए। में हाँ, सर टास्क में क्लियरली मेंशन था कि हम लोग को खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज करके वो प्रिंटर बनाना है। तो सर R&D ये सब वाला पॉइंट मुझे थोड़ा वो लग रहा था कि सही नहीं है, तो उस पर सर क्या है? मतलब आरएनडी उस हिसाब से लेंगे ना कि खराब पॉइंट, खराब कंपोनेंट्स का यूज करके भी हम लोग आरएनडी करके अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं ना। हाँ, आरएनडी बस ये सब कुछ कुछ पॉइंट होता है जो हाईलाइट हो जाता है, लाइक आरएनडी, या फिर अगर जो वो सिक्स सिग्मा यूज कर रहा है डिफेक्ट कम करने के लिए। और बाकी स्टार्ट और कंक्लूड वाले ऐसे ही हाईलाइट हो जाते हैं। सर कंक्लूजन में अगर कोई गलती रही हो तो थोड़ा उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। नहीं, कंक्लूजन सही ना था, बाकी सबका कंक्लूजन, पॉइंट सुन के वो एक अपना चीज conclude सिर्फ है, जो पूरा टाइम में आता, आप अगर कोई सोच रहे हैं ना कि आपको कंक्लूड करना है, तो पूरा टाइम में जो लोग कोई भी कुछ भी पॉइंट बोल रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। यस क्योंकि सर। लास्ट में आपको सबका कंक्लूजन का मतलब एक साथ बोलना होता है। अब क्योंकि जो सुन रहा है, ऐसे भी हो सकता है उनको कुछ अच्छा पॉइंट याद था, ठीक है, लेकिन आपने वो पॉइंट बोला ही नहीं, तो ये तो आपके लिए एक बैड इंप्रेशन हो जाएगा ना, कि आपने मतलब इनिशिएट किया कंक्लूजन करना, लेकिन आपने वो अच्छा पॉइंट ही नहीं बोला जो ग्रुप में बार बार डिस्कस हुआ है। तो इसलिए थोड़ा मतलब उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप भूले मत, यस सर। ठीक है। बाकी ओवरऑली सर परफॉर्मेंस सर अच्छा है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा तो मतलब एक्चुअल ग्रुप टास्क में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सर विद्युत सर, अगर पॉसिबल हो तो सर इसको डेली बेसिस पे करा दीजिए ना। ये डेली हाँ बेसिस सर। में तो पॉसिबल नहीं हो सकता है शायद, तो लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना फ्रीक्वेंट हो सके, ठीक है। अच्छा सर। क्योंकि टाइम नहीं है ना सर अब। या आपका कौन सा ब्रांच है, आर्यन? इलेक्ट्रिकल है सर। अच्छा, डेट कौन सा है आपका? डेट तो नहीं आया सर अभी। ठीक है, तो डेट नहीं है तो अभी टाइम है, डोंट वरी अबाउट इट, यू हैव एनफ टाइम टू अच्छा। प्रिपेयर, ओके। ठीक है हाँ, बट गाइस। पॉइंट अभी वो इंक्लूड कर देते कि पॉइंट याद रखिए, मार्केटिंग, फिर लीडरशिप या कोलैबोरेटिव टीम वर्क, ये सब पे थोड़ा मतलब वर्क करना है। वैसे वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, तो फिर वहां पे हाँ, फिर से देख सकते हैं। इसके रिलेटेड एक अच्छे से मतलब जो जो कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स है, जिन लोग को आपको मतलब फोकस करना है, ठीक है, उसके लिए एक बनाएंगे, सोचे हैं, ठीक है, देखते हैं। बाकी आपको एक आइडिया तो हो गया ना कि ग्रुप टास्क में कैसे परफॉर्मेंस करना होता है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता यस है, यस सर। यस ठीक सर। है, हम्म। ओके। ठीक है गाइस, ओके, फिर थैंक यू एंड सो करते मच हैं सर। इसको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू हाँ। सर। या थैंक ऑल यू। द बेस्ट गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।